सो अपार्ट फ्रॉम द डिग्निटी ऑफ प्लैनेट, हर प्लैनेट की एक कोई सा हाउस होता है जहां पे वो एकदम मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, एंड दैट हाउस इज कॉल्ड मरण स्थान ऑफ दैट प्लैनेट. ओके, सो यस, सो दीज आर द मरण स्थानास ऑफ द प्लैनेट. सो किसी की कुंडली में कोई प्लैनेट अगर इस पर्टिकुलर हाउस में है, so that planet can give, like that is the Maranasthana placement of planet, so that planet can give problems or misery up to the level of death in that person's life. Okay, so Rahu, if somebody's kundli is sitting in the ninth house, so this is like very much relatable also. Rahu ninth house मतलब ninth house होता है Jupiter spirituality का, उसमें राहु आ गया है. That is like a Maranasthana placement of Rahu for that person. Okay, तो if you find any horoscope, तो this is like, ये सब लोग just remember it as it is. मतलब ये तो किसी की भी कुंडली देखो तो सबसे पहले you should check this कि कोई प्लेनेट उसका मरण स्थान पे तो नहीं है, तो उसकी रेमेडी सबसे पहले यू कैन गिव. एंड ऑल्सो मरण स्थान नाम इसलिए दिया गया है कि somehow this person this person death is also connected with, will also be connected with this house and that planet. जो भी planet उसकी कुंडली में मरण स्थान में है और जिस हाउस में है, उसकी जो डेथ का रीजन होगा ना, वो भी उसी से कनेक्टेड होगा. ओके, सो भैया मतलब लग्न में बोल रहे हैं ना कि अपना अपना चार्ट में, लग्न चार्ट में राहु लग्न नाइन्थ चार्ट, हाउस। करेक्ट, भैया लग्न मेरा ही है, चार्ट. मेरा ही है। हाँ, तो you have to be more careful. So I'll just show you. So you search on the YouTube. I have a video about ज्योतिर्लिंग. तो हर प्लेनेट की मरण स्थान प्लेसमेंट की रेमेडी होती है कि उसका एक पर्टिकुलर ज्योतिर्लिंग होता है. तो राहु का ज्योतिर्लिंग होता है औरंगाबाद में, दूशनेश्वर ज्योतिर्लिंग है औरंगाबाद में, तो यू कैन विजिट दैट. ऐसे ही एक मेरा वीडियो है, आई शेयर इन द ग्रुप आल्सो, लेट मी डू इट राइट. यू कैन जस्ट सी ऑल दिस प्लेसमेंट. आई जस्ट शेयर दैट लिंक उस वाले वीडियो को जिसमें आई हैव शेयर्ड रेमेडी फॉर मरणस्थाना प्लैनेट. So, one question here. या, So the death will be related to that planet and house, but that will happen only once. But will it impact all through the life? correct. It may impact all through the life. It is again dependent on many factors. लेकिन that particular aspect of life will be pain, will give you pain. There are very high chances कि वो मरण स्थान प्लेनेट में है तो उस हाउस से या उस प्लेनेट से रिलेटेड चीजों में आपको पेन मिलेगी लाइफ टाइम. देयर आर वेरी हाई चांसेस. और इसका रीजन भी यही होता है कि उस हाउस से रिलेटेड आपने पिछले वर्ष में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुछ खराब कर्मा किए थे. लाइक सपोज संदीप जी का राहु नाइन्थ हाउस में है मरण स्थाना प्लेनेट में, सो इट इज हाईली पॉसिबल दैट इन द प्रीवियस बर्थ संदीप जी वॉज सम गुरु और समबडी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम किया था जिसकी वजह से दैट वाज नॉट दैट गुड. ओके, पिछले जन्म, पिछले कोई भी जन्म में, तो ही वॉज गुरु, समबडी गुरु और नाइन्थ हाउस रिलेटेड उसमें थे, लेकिन उन्होंने कुछ तो ऐसा काम किया था दैट वाज लाइक वेरी हॉरिबल. दैट्स व्हाई दे हैव नाउ दैट हाउस में मरण स्थान प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट. Okay. No, I asked this question because for me, Shani is in first house. या, So, तो शनि hmm. इन फर्स्ट हाउस, दैट मीन कौन, मनीष जी बोल रहे हैं क्या? So I'll tell you one observation. Every time there is a Antardasha of Shani, na, I see a lot of problems. So, करेक्ट, करेक्ट. शनि के लिए कौन सा ज्योतिर्लिंग है, यू रिमेम्बर मनीष जी? वो महाराष्ट्र महाकालेश्वर। नहीं, आई थिंक शनि शंडिल कोई टेम्पल आपने बताया था, चंद्रेश्वर. शनि के लिए वैसे ये जो शिरडी है ना, शिरडी के पास शनि शिकनापुर है. दैट इज शिंगनापुर. ऑल्सो वेरी गुड, एंड देर इज अ ज्योतिर्लिंग ऑल्सो एसोसिएटेड विद दैट. तो आई एम जस्ट शेयरिंग, या आई गॉट इट. तो मैं ग्रुप में ये वीडियो डाल दिया हूँ, ये मरण स्थाना प्लेनेट वाली रेमेडीज का. तो आज मे बी वेन एवर यू आर फ्री यू कैन वॉच दैट वीडियो. इन दैट आई हैव शेयर्ड द रेमेडी फॉर दिस. ओके, तो ओके, पर शनि इन द साहिल फर्स्ट. हाँ,
तो साहिल भैया मुझे पूछना था अभी जब वी गो थ्रू एनी हॉरोस्कोप सो व्हाट आर द Yes. एस्पेक्ट दैट वी हैव टू कंसीडर टू मेक प्रॉपर रीडिंग बिकॉज आपने और एक एस्पेक्ट बताया कि मनस्तान भी कंसीडर करना है। आपने अपने पहली बात बताया था कि दशा भी कंसीडर करना है सब लॉर्ड भी कंसीडर करना है। तो अगर कुछ रीडिंग करना है कोई कोई भी रैंडम हॉरोस्कोप का so what are the aspects मतलब what are the pointers कि ये you have to go to this first then this then this then this ऐसे क्या क्या पॉइंटर्स या क्या Hmm. क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे हम लोग प्रॉपर रीडिंग निकाल सकते हैं। ओके सो देखो, सबसे जो अच्छा तरीका है, व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इतने साल का, दैट आई एम शेयरिंग विद यू, कि हर इंसान का ना, जो उस समय उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा होता है, पहले वो चीज सुनो, क्योंकि कुंडली में इतनी सारी चीजें होती हैं कि यू कैन नॉट फाइंड आउट कि एग्जैक्टली उस लाइफ में उस समय उसको कौन सी प्रॉब्लम कर रही है। To first listen to that problem and then analyze in detail. Today we will cover that part. Analyze the in detail what are the things which are associated with that house or the karaka of that planet which is causing this issue. Study that in detail. उसके बाद then give the remedy. Like किसी जैसे मनीष जी ने बताया, शनि उनका फर्स्ट हाउस में है, तो फिर यू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टडी कि शनि की डिग्निटी कैसी है। ओके, शनि कौन कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है। ओके, शनि की महादशा अंतरदशा ट्रांजिट कब हो रही है, फर्स्ट हाउस में स्पेशली ट्रांजिट कब हो रही है, महादशा अंतरदशा कब आ रही है। ओके, तो ये तीन चीजें पढ़ के यू कैन जस्ट मेक हिम अवेयर कि ये पीरियड आपका इतना अच्छा नहीं होगा, और जो जो हाउस शनि रूल कर रहा है उसमें आप यू हैव टू बी मोर केयरफुल। जैसे शनि अगर 12th हाउस रूल कर रहा है, क्या लगना है मनीष जी आपकी? कर्क, कैंसर। कैंसर लगना है, तो इट इज ओके। अदरवाइज अगर जैसे शनि अगर 12th हाउस रूल कर रहा होता, तो उनको फिर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के भी बड़े चांसेस होते हैं, या फिर 8th हाउस रूल कर रहा होता तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन सी। तो ऐसे करके, कोई ऐसे करके, वैसे एक एक तरीका हम लोग को बताया भी गया था, तो देर इज अ प्रॉपर एल्गोरिदम टू सी द चार्ट, बट इट मे नॉट बी रेलिवेंट फॉर ऑल द पर्सन. Yeah. So the correct way is to find out what other person is looking for and what is the current problem, and analyze that particular thing in detail and tell your insights and remedies for that. See, other thing is good things also happen in Shani's Antardasha. Like I became teacher that time. So both So see, extremes. correct, Yeah. correct. So what happens? Like, see, then you have to see the planet quality also. So Shani is actually, if you have very good intention and you are willing to do hard work without any expectation, seva basically. If you are willing to do seva, then Shani can give you very favorable circumstances and some good results. Okay, like for Yeah. example, I tell you my case. Like nobody is my in my family is like that well qualified IIT NIT के level तक का, and I was like studying for IIT JEE when I was going through साढ़े सात एकदम मेरी राशि पे ही बैठा था शनि. Hmm. So like I was studying in Kota and everybody know like Kota में हर साल 50,000 लोग जाते हैं that time also 7-10 years back. But somehow like, and I was also not very topper kind of a person throughout, लेकिन somehow maybe my intention was good, or maybe थोड़ा सा मैं कुंडली में आगे का पता था कि I will use it in a positive way. So somehow I got the blessing of Shani, and yeah, I cleared IIT JEE that time. So that is how. और उस समय क्या, इन जनरल भी आई टेल यू कि थोड़ा बहुत तो लक फैक्टर होता है हर चीज में. जैसे लाइक सपोज इवन इफ यू विल सी द जेई पेपर, सो इट इज 80% इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप, राइट? So if there are four options, if you are, and if you can eliminate one or two, so what left? Two options. So there is a 50% chance that that can be correct or incorrect. Okay, so that is the place where you need luck. Maybe anybody studying right now, Ritika, you are studying or working, so they can understand this thing. I'm working right now. Okay, कोई है नहीं, तो they can understand this thing कि luck का भी बड़ा फैक्टर होता है, कोई भी आपको competitive एग्जाम क्लियर करना है. I agree with that because when I was giving my mains and after in 12th,
my Sadesati was going, and it was not Yeah. a very nice period. So even if I was giving my 100%, I was very good. I was a good student, but still all the attempts were going like all everything was failing, and it's been Mhm. happening for the last 5 years because it's still. But now things are becoming better. But now I know like it must be not in a good position. So mm, Yes. So now, like maybe that time you were not associated with the yes, spirituality. That is yes, probably, yeah. So that mm, is also one of the reason. If you are and, associated with yeah, spirituality, then Shani gives you good results good mostly. results. Ah, Hmm. Okay, so Just then to we, clarify, hmm, Saraswati means when it is going through your Rashi. Rashi, when it is in your Rashi or in your previous Rashi or in the Rashi Uh, ahead of you. After Okay. that. And Yeah. I have Maranasthana mein, covered this in the last class. No, Sanjay, you are asking this. yeah, I just forgot कि वो first house के through जाता है तो then it is called Saraswati or is it in the Rashi? तो Uh, अभी शनि कौन सी राशि में है? Abhi is in which Rashi? I have to check one second. It is in Aquarius. Aquarius, no? Aquarius, yeah. 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 It is in Aquarius. तो किस किस की 7.5 चले हुए? एक पीछे मकर राशि और एक आगे मीन राशि. Okay. अभी अगला Then किस राशि में चलेगा. जाएगा? मीन राशि में. तो किस किस की 7.5 होगी? Aries and Aquarius. Correct. So your 7.5 is starting when? After 2.5 years. Yeah. So now you And can be, second yeah. question, I think I got disconnected. Maranasthana mein, does every planet have a different flavor of like um, if somebody's Shani is there, will it have a different flavor? If जैसे मेरा Venus का है, will it have a different flavor or no? Okay, you have Venus is in your 6th house, kya, in Lagna chart? Yeah. Yeah, so that's why you have to face a struggle related to marriage that you have experienced, I think, over 1-2 years, right? Yeah. Yeah, so that is the tricky portion in your life. So now you can relate. Okay. And also Venus, like it is connected, if it is in the 6th house, so it is connected with diseases also later on in your life. So you have to be extra careful about your health also. Okay, so that is again Okay. because 6th house is connected with diseases. Okay, so in whichever house the Maranasthana planet is sitting, so you have to see both the things, the planet attributes plus the house attributes. They both can bring pain in your life. Okay. Okay, so I hope everybody is clear with this. And this is something very interesting. Everybody should remember this by heart. Sun 12th house, Mars 7th house, Mercury 7th house, Jupiter 3rd house, Venus 6th house, Shani 1st house, Ketu 3rd house, Rahu 9th house. Okay. Moon is also in the 8th house, is Maranasthana. भैया इसका सीक्वेंसिंग इंटेंसिटी के हिसाब से किया है कि ऐसा कुछ नहीं है सीक्वेंसिंग Random. Sequencing रैंडम is random. The chances that Intensity. decrease when the Kosar goes to that. Intensity, Hello. yeah. And who is asking Udit? You tell me how we will see the intensity. From Gochar and Dasha, right? No. Anybody else? कैसे intensity देखेंगे कौन से मरण स्थान planet की ज्यादा खराब है? debilitated exalted Correct. We have to see the dignity of planet. अगर जैसे खराब डिग्निटी है ऐसे मनीष जी का शनि कौन सी कर्क राशि में व्हाट इज द फ्रेंडशिप स्टेटस विद मून मनीष जी दिस इज अ बस एक यही है जो मेरा एनिमी है इट इज एनिमी इन है ना तो फोर्थ एनिमी मून इज सिटिंग इन योर विच हाउस मून इज इन 10th हाउस ओके या इन हाउस ऑफ एरीज तो ठीक है तो वो टेम्पररी तो फ्रेंड हो गया ना मून हाँ मून मून फ्रेंड है मून इज फ्रेंड इट इज अ फ्रेंड एज वेल एज बाय एनिमी तो अदर न्यूट्रल हो नहीं गया इट्स अ तो फ्रेंड ओनली बेसिकली नहीं फ्रेंड है मून इज फ्रेंड इन एरीज हाँ तो बेसिकली यू हैव टू सी द डिग्निटी ऑफ द प्लेनेट ओके तो इफ द डिग्निटी इज आल्सो less then it will bring more problems. Okay, so now let's move to the most important part of today's session,